We Yeah, hi. you have come in there. Oh, hello everyone. So Hi. we are here live on our StreamYard as well as on Instagram. So hello everyone. Welcome to Thoughtful Thursdays presented by Educate to Elevate. And this is our episode number 15. And Nandaji and I have been so excited for today because we were pretty much confident and sure that today's session is going to be super rocking and super fun. बिकॉज आज हमारे साथ ऐसे ही एक सुपर अमेजिंग एंड फन योर गेस्ट है एंड आई वुड लाइक नंदा जी टू प्लीज टू द ऑनर्स एंड इंट्रोड्यूस हर टू ऑल ऑफ आवर लवली गेस्ट्स. I would say here is a lively, fun-filled, vivacious, beautiful young girl who, for a profession, is an RJ. That she has so many other characters to herself is something that we all sit and watch as we get, all of us connected to educate to elevate the thoughtful Thursdays today. Let's introduce Tripti, who is now RJ Tripti, and she has a huge fan following. And she is somebody who is so widely loved because of her liveliness, her naughtiness, her dynamism. That let us together now enjoy this episode and see. Over to you, coach, if you'd like to add something about RJ Tripti. So the gossip queen of the radio world, Ajay Tripti, how do you feel? Welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ा मजा आता है डिसअपॉइंट करने में. ऐसे लोग लंबी लंबी तारीफें कर देते हैं और उसके बाद पूरा इंटरव्यू आता है. बहुत मजा आता है मुझे डिसअपॉइंट करने में. थैंक यू फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन. मैं पता नहीं उस लायक हूँ भी या नहीं हूँ, लेकिन अब जब आपने बोल दिया है तो आई विल जस्ट इफ यू से सो. Yes, I think it's good to be modest. Yeah, Yes, Nandaji. Tripti, we choose our words very carefully. हम लोग हमारे हर गेस्ट की इतनी रिसर्च करते हैं, you know, so we know all the naughtiness that you have put out on, the content that you put out and how you've been appreciated. So we are really happy to have you here, and let's start. Would you like to begin, coach, or can I ask Yes. the question? You asked the first question, Nandaji. Okay, from the beautiful Tripti who lived next door to now RJ Tripti, how has the journey unfolded for you? Did you right from your childhood want to become a RJ या कुछ ऐसा turning point life में जहाँ आपने कहा कि भाई I'm going to be the voice and the content queen? I had again मैं एक बार फिर से disappoint करने वाली हूँ क्योंकि there isn't gonna be a sob story, a struggle story per se. So from Tripti to RJ Tripti, I don't know, this was something जो लोगों ने मुझे देखा और मुझे शायद नहीं देखा था. Because earlier अगर मैं सबसे पहली अपनी मेमोरी बात करूँ कि what did I want to become, मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती थी. That did not happen. And उसके बाद इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब बहुत ज्यादा जब मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, उस टाइम पे तो मुझे लगता मुझे बैंक की जॉब कर लेनी चाहिए, चुपचाप बैंक में जाकर 9 से 6 की जॉब, काम खत्म. बट नो जॉब इज इजी. ओके, इनफैक्ट लोगों को लगता है बहुत ग्लैमरस जॉब है, वो ये लोग जाते हैं माइक पर बात करते हैं और वहां से चले आते हैं बड़े आराम से. सब कुछ भी नहीं होता है. हम लोग की भी अपनी शिफ्ट्स होती हैं. वी गो देयर, वी prep our show, we do our show, और show के टाइम पर because you know that there are people out there who are listening to your show, who are listening to every single word that you're saying. It is actually a big responsibility. You have to be worth their time. So yeah, so that was there. But my journey has been very very interesting. So like I said, I wanted to become something else. Then जब journalism और mass communication की बात आई, then I wanted to become a hardcore झोला छाप journalist. Like दुनिया बदलनी है और एकदम आंधी तूफान लाना, वैसा कुछ मुझे करना था. बट समर ट्रेनिंग था कॉलेज के टाइम का, और उसमें आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस फील्ड रेडियो की, एंड देन आई रियलाइज्ड दिस इज फन.
अगर सब जगह जाकर स्ट्रगल ही करना है तो कुछ फन करके क्रिएटिव तरीके से स्ट्रगल करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं. Yeah, and I started my career as something else. I've done anchoring, production, editing, everything. You name it, and I've done it. And thankfully, fortunately, I landed this job at Mirchi, and rest is history. I'm like I've been a part of this field for 6 years now, 6, 7 years. Yeah. तो प्रतीक जी कह रहे हैं कि आप अपने फैंस के लिए मिस यूनिवर्स हैं, और वैसे ही हमने साइंस में पढ़ा है, लाइक देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस. तो Yeah. आप कंटेंट की दुनिया की मिस यूनिवर्स हैं, आप आरजे की दुनिया की मिस यूनिवर्स हैं. सो क्या बात है. बस अब ये मैं अपना बायो लिख ले रही हूँ. मैं मिस यूनिवर्स अपने यूनिवर्स. Absolutely. दिल्ली की मिठाई बेच देना. Okay, over to you, coach. So, I would say here, Tripti, like, very true that you said that there hasn't been a sob story, but I don't feel that every tragic story is happy or a motivational story. Everything, because the youth and especially our audience, they are in the stage where they're figuring out stuff, है ना? So you are an example where you were having certain dreams, you tried something out, and then at one point of time when you got something and you realized that this is it. So this is a very beautiful message in itself, that rather than just sitting and getting some universal message कि हाँ ये तुम्हें ये करना है जिंदगी में, keep trying, keep deciding, and then when it clicks and you come to know like this is what I want. So I feel that's actually a very inspirational story that you have told about your journey. And when I said it's not a sob story, I see people who like things that we regularly do, like हमारे पापा मम्मी हम लोगों को बोलते थे 7-7 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता था, ये करता था वो करता था, एंड आई एम श्योर उन्होंने वो स्ट्रगल का टाइम देखा था. हमारे लिए चीजें बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क हमेशा रहेगा. हर काम में हर एक जगह पर हार्ड वर्क है, बट हर हार्ड वर्क को स्ट्रगल नहीं बना सकते हम, क्योंकि फिर वो ना जो लोग रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके स्ट्रगल को अंडरमाइन करना हो जाएगा. तो अगर आप सिंपल सा हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा. Don't make it a struggle story, please. Out of it. So yeah, that's so beautiful and authentic. And listening to your such powerful words, I would like to ask you the next question that I'm very curious about is, like, being RJ means you are connected to masses, right? So what do you feel are the strengths of a radio jockey? See, first and foremost, like people say, voice, modulation, pronunciation, those things are important, but you can always work on them, you can always improve these things. But the first and foremost things जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important होती है वो है you're heard. People are listening to you. Okay, 10, 12, 15, 1000, 100 जितने भी सुन रहे, people are listening to you. You have to be worth their time. You have to be your content, whatever you're saying has to be something that will add to their life, that will add something to their life. So it has to be very very important कि आप जो बोलने जा रहे हैं आप उसके बारे में आपको सारी चीजें पता हो. हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आप 10 लोगों को और हाफ बेक्ड नॉलेज नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है ओपिनियन आपका. don't just have an opinion. Okay. Was that a dog? Yeah, I think so. how sweet. Okay. So don't just have an opinion just for the sake of it. मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो भी बोलते हैं ऑन एयर जाकर, स्टूडियो में जाकर, माइक पर, ऑलरेडी सबको पता है. सबको पता है कि क्या हो रहा है बाहर, सबको पता है. हर एक, जैसे हम न्यूज बोलते हैं, ठीक है, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो? दाल चावल सबकी प्लेट में है, आप अचार हो. मुझे हमेशा लगता है रेडियो अचार है, पापड़ है, जो वो टेस्ट, वो फ्लेवर ऐड कर सकता है नॉर्मल से दाल चावल में. तो आप ऐसा कोई ओपिनियन अपना दे सकते हो. आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपका टेक मैटर करता है, आप क्या उस बारे में सोचते हो. अगर आप फेवर में हो, जितने भी लोग फेवर में है वो आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि यार ये तो मेरे जैसा सोचता है,
सोचती है। अगर आप अगेंस्ट हो तो लोग आएंगे, अरे वो कैसे ऐसे सोच सकता है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं वापस जाऊंगा उसको सुनने के लिए इस बारे में वो क्या सोचता है। तो फॉर और अगेंस्ट कुछ भी आप बोलोगे, पीपल विल कम टू यू, लेकिन कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, बाकी सारी चीजें तो वर्कआउट हो जाती है। True that. So nicely and beautifully explained the strengths. Nanda ji, why would you like to take over? हर किस्म के ऑडियंस होते हैं और उसमें अगर बीच में कुत्ता एक ऑडियंस बन के आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यू डोंट नो वो क्या बोलने जा रहा है। नहीं नहीं, ये लाइव स्ट्रीम हिट हो गया, आपने देखा नहीं है कितना पसंद करते हैं। nobody will mind, nobody will mind. Yes. I know, I understand. So, RJ, हम लोगों के मन में ये प्रश्न है कि when we see you, when we've seen some of your videos, when we've seen you performing, you know that constant flow of conversation, thoughts जो बहता है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि you get stuck or you feel कि यार मैं भूल गई मुझे क्या नेक्स्ट कहना था, या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? और अगर हुआ है तो how did you manage to cope with that? Yes. So many times, अरे बाप रे, मेरे ख्याल से मैं वर्ल्ड की पहली हार होंगी जिसके साथ ये सबसे ज्यादा होता है। आई मम्बल, आई फंबल, आई स्टटर, एवरीथिंग सब हो जाता है एक ही साथ। और अगर ऐसा होता है ना कि आपने एक मिस्टेक कर दी, एक फंबल कर दिया, उसके बाद दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, सारे उसी टाइम पे स्यापे हो जाने होते हैं। बट दैट इज लाइक हाउ नॉर्मल पीपल टॉक, राइट? And it doesn't have to be a recorded ekdam crisp, ekdam clear cheese. You can fumble, people normally fumble, people normally mumble. And agar koi mistake ho rahi hai, just own it up, just accept, just admit ki ha aisa hua hai, and laugh it off. It makes you more likable, it makes it more approachable. लोगों को लगता है अरे यार ये तो मेरी जैसी गलतियां कर रही है, तो मेरी जैसी है, तो पीपल विल ऑलवेज, पीपल अंडरस्टैंड, हमें पता है कि कोई ऐसा नहीं है कि ये सुना चाहेगा ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे होस्टिंग हो रही है और सब कटी हुई चीजें हैं, एकदम रिकॉर्डेड क्रिस्प। पीपल वुड वांट टू हियर समवन जो उनके जैसा हो। तो मुझे यही लगता है कि ओन इट अप, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ कोर्स जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बड़ा मिस्टेक हो गया तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। दैट्स इट। True. Absolutely. I think this answer of yours, Tripti, is such a breath of relief. You know why? Because, in fact, I would say guilty of this that, I've always taken RJ as one of the jobs where, you constantly, I've been always intimidated thinking, yaar, non-stop kaise ideas aata hoga. Recently, I took part in like, a contest which was related to, getting 1 hour of RJ contest kind of a thing it was. So, the other fellow, I reached the final round there, but then the other lady who was there, she spoke non-stop in a flow, and I knew I could do it, but I got intimidated by ye to lady. I don't have that. So, but then what you said is so true, that people actually relate to authentic people, and that's where they feel relatable, and the इमोशनल बॉन्ड आई थिंक तभी इंसान का दूसरे के साथ बनता है जब वो एक कॉमन स्ट्रिंग कहीं ना कहीं आता है। एंड आई थिंक इट वाज सच अ ब्यूटीफुल आंसर। आई वुड लाइक टू ऐड थोड़ा सा 2 पॉइंट्स इसमें। और पहली चीज तो ये है कि लोगों को हमेशा लगता है कि बहुत बोलती है इस वजह से आरजे, ये कभी नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा बोलते हो इस वजह से आरजे बन सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप क्या बोलते हो वो मैटर करता है, कितना बोलते हो नहीं, आप क्या बोलते हो वो मैटर करता है। तो आपकी बातों में सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जब आप ऑन एयर होते हो ना, आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे। लोगों को लगता है कि अरे माइक ऑन किया और बोलना स्टार्ट किया, नहीं, हम अपना शो प्रिपेयर करते हैं, हमें पता होता है कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है ना, हर एक टॉपिक के बारे में इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो सब मिक्सअप हो जाता है। एंड जितना दिमाग में होता है उसका ओनली 20 to 30% ही इज स्पोकन, उससे ज्यादा नहीं। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी दिमाग में, बट हम उसको फिल्टर करते हैं, हम उसको फिल्टर करके
उसके बारे में प्रिपेयर करते हैं कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है, और कौन सी बात ऑडियंस को सुनना ज़रूरी है, दैट्स इट। तो हमें पता होता है हमें इतना ही बोलना है। तो और हाँ, एक और मिथ है, लोगों को लगता है कि कितना बोलते हैं आरजेस, कितना बोलते हैं। आपको बता दूं, 1 घंटे में हम 6 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते। 6 मिनट भी Oh. मैक्सिमम लिमिट है हमारी। और ये जैसे एक एक टाइम जब हम ऑन एयर बोलने आते हैं, तो हम 1 से 1.5 मिनट की बातें बोल सकते हैं। उतने में अगर Oh. आप अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को नहीं समझा पाए जो आप बताना चाहते हो, उससे ज़्यादा आप कितना भी टाइम ले लोगे, नहीं समझा पाओगे। सिंपल सी बात True. है। In fact, I would say that is tougher. कम बोलना is tougher. इट इज़ एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जो बातें आप 3-4 मिनट में बोलोगे, उसको आप अगर क्रिस्प करके, उसको आप ससेंक्ट अगर उसमें बोलना चाहो, तो वो टफ हो जाता है, बहुत टफ होता है इनफैक्ट। Absolutely. Now, Very true. coming to a question, Tripti, because I have been very curious, and Nandaji even, in fact, were discussing this Yeah. thing that, what is the thought behind this name, Masala Trip tea? Yeah. So, anybody who follows me knows कि I'm a big like tea lover. And not just that, like I'm not a tea enthusiast. I wouldn't go out and try pink wali chai. No, I won't. I love my masala tea, and that's it. I love my masala tea. Or yeah, high five. So yeah, that's where the name come from. मैं अपना नाम Instagram handle change करना चाहती थी, and I was looking for a very interesting सा कुछ नाम, जैसे हम बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं ना, मोस्टली सेन, ये वो, स्पिल द सैस। तो मुझे लगा ऐसा कुछ Yes. मैं अपना धमाकेदार नाम लेकर आऊंगी, सबकी जुबान पे चढ़ जाएगा। तो मैंने इनफैक्ट क्वेश्चन स्टिकर किया इंस्टाग्राम पे। आई आस्क पीपल कि सजेस्ट करो भाई कोई नाम अगर आपके है दिमाग में। दिस नेम बाय द वे वाज सजेस्टेड बाय माय हस्बैंड, कुश। Oh, so तो sweet. मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही नाम है, एकदम मतलब क्या पन है, सही बैठ रहा है। सो द मीनिंग इज टू फोल्ड। मसाला वाला कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर सारा मसाला मिलेगा, प्लस मसाला तृप्ति। तो या तो आई थिंक हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बैठेगा सही। तो आ गया। Beautiful. It's absolutely beautiful because जैसे आपने rightly कहा, the pun is there on the word masala and that's the content you put out. And वो इंसान वैसे ही गॉसिप सुनकर तृप्ति हो जाता है कि भाई मेरे कान में कुछ आया information. So and chai, like lot happens over coffee, but उससे भी ज़्यादा happens over chai. So, Chai, yeah. A Absolutely. lot can happen over a cup of coffee, but चर्चा happens only टी के Over साथ। tea. I agree. तो वैसे भी आपने बताया कि ज्यादा बोलना या you gave us some parameters of who is an RJ. अब सोचे just let's take a hypothetical situation कि एक दिन आपको ऐसा मौका मिलता है where you are allowed to speak unfiltered और पूरी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी. So RJ Tripti Tathastu becomes an international RJ, like global RJ. पूरी दुनिया उसको सुन रही है. तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? What is the message that you would like to give at a time like this when nothing that you say is getting filtered? Okay, like कोई restrictions, कोई limitations नहीं. Okay. I think मैं कोई मैसेज दूंगी ही नहीं. I would let people talk. We'll just sit, chit chat. म्यूजिक ओपनली बज रहा है, कोई भी म्यूजिक, आप बताओ कौन सा गाना सुनना है, सारे गाने चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान बहुत मिल रहा है लोगों को, बहुत ज्ञान का ओवरलोड हो रहा है। मैं तो वैसे भी अपने आप को डीमोटिवेशनल स्पीकर मानती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं। तो मैं सीरियसली ओवरलोड नहीं करना चाहूंगी। मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप गाने बताओ, आपको जो भी बोलना है, वेंट करो, आप वाइंड अप करो, आप रैंट करो, आप क्रिप करो, जो भी करना है मेरे पास आकर करो। ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बात करो, ज्ञान नहीं दूंगी मैं। It's so this beautiful. is like something what we coaches do. We always say this thing as life coaches. This is one of the parameters. The day we started learning, and started getting our certification, we were told ज्ञान नहीं बांटना है.
सुनना है सामने वाले Yeah, को, exactly. और सामने वाले के ही अंदर से उसका आंसर निकलवाने में उसकी मदद करनी है. So I think you would be the RJ coach of the world that day. Yeah, I would like that. I would like that. No, no message from my side. मैं कुछ ऐसा स्पेशल बता ही नहीं सकती हूँ जो आपने नहीं सुना है. तो जो ऑलरेडी सुन चुका है क्यों सुनना है? गाने सुनो. So true. So true. That's so true. Just keep the tempo up and सब Yeah, लोगों की spirits को ऊपर ले जाओ. So beautiful. और उसमें चलते फिरते थोड़ा मसाला डाल दो. थोड़ा मसाला हो जाएगा. So, like keeping the fun intact, but there is also important, the mission that we have through Thoughtful Thursdays, Tripti, and that is that we really want to, because most of our the niche audience that we, Nandaji and I, have had is the young readers. And in India, I know the parents वो हमारा भला ही चाहते हैं, but still, I mean, they are still stuck on the fact of एक government job, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर. एंड वी आर सो मच डीप रूटेड टू आवर वैल्यूज कि हर इंसान को थोड़ा डर भी लगता है टू गो अगेंस्ट द फैमिली. बट देन you have to understand that like we have to make and propagate this idea कि you can build your passion into something that you can lead your life with, but it's not an easy way. There are ups and downs that happens when you are choosing your passion. So today people get easily disappointed and they lose their faith and abilities. So what would you like to give a message to the young brigade? ओके. सो सबसे पहली चीज तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी पेरेंट्स हैं. वो डिसअपॉइंट होने का बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है. मेरा सिर्फ एक ही, इनफैक्ट अभी लाइक the other day, like few days ago, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे आपस में about life and everything. So showing up is the most important thing that we can do sometimes. It actually is the Yes. hardest thing sometimes. कि आज तो मनी नहीं है यार. आज मनी, आई एम लाइक सो डल, सो ब्रोकन दैट आज मनी नहीं है. बट जस्ट गेट अप एंड गेट आउट. शो अप. नहीं कॉम्पीट करना है किसी से, नहीं सक्सेसफुल होना है, नहीं करना है सबसे अच्छा काम, बेस्ट होना नहीं है, परफेक्ट होना नहीं है. जस्ट गो आउट एंड शो अप. That is the best thing that you can do. That is the most important thing that you should do. I think that's Nandaji exactly what. would realize right now because the similar you tell, you spill the beans, Nandaji. So this is exactly what happened to both of us today. Okay. I was like overloaded with something and I was just not up to it, and I was just about to message her and unka message aa gaya, and she said that I have been a little under the weather today and I've been like resting the whole day. मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है. I was like, ओए होए, अब चुप करो और तैयार हो जाओ and show up. And she said कि I'm also like trying to get into the mode to get ready and all that. So it was like we were having a great laugh about it before we came on. And this Yeah. has happened to us so many times, like there have been situations in her home, my home. Lekin hum log, despite anything that happens, we show up and we make Sure. sure that we are sharing. So we completely resonate with what you have just shared. It's such an amazing share that you have just said. So आपकी जो ये नटखट अदाएं हैं, नॉटी नूर जहां की, बताएं आप यहाँ इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? नॉटी नूरजा तो हम आपको थोड़े टाइम के बाद कहेंगे बन के दिखाने के लिए, बट फॉर नाउ टेल अस वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम? Okay, so because I hail from Lucknow, okay, I come from Lucknow, and लखनऊ में शेरो शायरी, तहजीब, तमीज, ये सारी चीजें अपने आप ही इन्नेट है, वो इनहेरेंट है, आ ही जाती है, ठीक है. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग. जब ये टिकटॉक का जमाना नहीं था, जब ये रील थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये उस टाइम की बात है जब मैं बनाना चाहती थी कुछ क्विक, एकदम स्नैकी कंटेंट. उसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, मैंने सोचा चलो शायरियां करते हैं, बट विद अ ट्विस्ट. मैं एक्सेंटेड वॉइस में करूंगी शायरियां, और इट हैज टू बी लाइक फनी, थोड़ी ट्विस्ट वाली शायरियां, सैसी. एंड दैट वाज द होल आइडिया. एंड यू नो ओवर द इयर्स वो काफी इवॉल्व हुई, जो कैरेक्टर है नॉटी नूर जहां. फिर आई थॉट कि लेट्स वीव अ स्टोरी अराउंड whatever she is going to recite, whatever she is going to deliver. Weave a story, come up with a few more punches,
एंड फिर उसके बाद उसका लुक डिफरेंट किया, उसको एक कैरेक्टर बना के निकाला. अर्लियर आई जस्ट यूज्ड टू डू इट लाइक फॉर द सेक ऑफ इट, बट देन मैंने सोचा कि चलो इसको फुल फ्लेजेड कैरेक्टर बनाते हैं. एंड मैंने लोगों से पूछा, अगेन मैं काम नहीं करती हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बस ऐसा क्वेश्चन स्टिकर लगा देती हूँ, नाम बताओ मुझे. तो मैंने इसके लिए भी सजेशन लिया. मैंने कहा कि बताइए भाई, क्या आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप जानते हो ये क्या कैरेक्टर है, आप मुझे बताओ नाम क्या होना चाहिए इसका. somebody suggested नूर जहां, क्योंकि शायरियां करती है. एंड one of the suggestion had this name, had the naughty word in it. तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया, नॉटी नूर जहां. एंड आई इट had like I thought it has a good ring to it. let's Yes. let's go with it. नॉटी नूर जहां वहां से अब काफी इवॉल्व हो गई है. अब नॉटी नूर जहां इज अ पर्सन जो बॉलीवुड में जाना चाहती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उनकी बात बनी नहीं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो फेल हो गई हैं, वो बाकी सब पर ब्लेम डालती रहती हैं. सो लाइक ऐसे जैसे उनका इंट्रोडक्शन आता है, शायरा तूफानी हूँ और मैं फेम की दीवानी हूँ. सो वो फेम की दीवानी है, तो इस तरीके से होता है. So nice, so amazing. And we're gonna have You know, yeah, please Nanda ji, you नहीं continue. मैं कह रही थी इनका ये कैरेक्टर भी जिस तरह से इवॉल्व हुआ है ना, कितना ब्यूटीफुल है कि शुरुआत की बस ऐसे ही कुछ बोलना है, फनी करना है, तो उससे कर लिया, और धीरे 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 उससे एक कैरेक्टर बना. एक कैरेक्टर से अभी एक एक कहते हैं ना सूडो आइडेंटिटी बन गई है, नॉटी नूर जहां. नॉटी सो नूर जो जहां. Absolutely. हाँ, जो आरजे तृप्ति से काफी लाइक यू कैन इमीडिएटली रजिस्टर कि अच्छा दिस इज हर. या प्लीज कंटिन्यू कोच. Yeah, so I just wanted to, I want to share a little bit first before I ask this question. The reason why I asked this question is, 2 days back I was talking to my childhood friend and हम लोग बहुत सारे अपने लाइफ की चीजें डिस्कस कर रहे थे. And then we were talking this thing कि यार हम ना पहले लगता था कि when you reach your 30s it's like yaar, it's so dreadful, you're not young anymore. But now when like I am in my 30s, I feel I think it's the best time of my life because now I don't give a crap to the world and I know what's my self love, what is important for me, how I can overcome my limiting beliefs. And we both were talking ki yeah, now is actually the best time. And we were thinking कि हम क्या बेवकूफियां बचपन में करते थे. And we had such a nice conversation when Nana ji and I, we were making the questions for you. We thought यार एक इस तरीके का कुछ question तो बनता है. So we would like to ask you, like, what advice would you like to give to your younger self, being right now at the beautiful stage of your life that you are? Okay, so many things. First of all, इतने कपड़े मत खरीदो बहन, इतने कपड़े मत खरीदो, जगह नहीं बचेगी रखने की. बहुत सारी चीजें हैं. To be okay, jokes apart, but yeah, I would like to tell my younger self, everything in your life happens for a reason. Just wait. Just wait, you will see it for yourself. Everything happens for a reason. आपको जो चीज अभी बुरी लग रही है, आप आज से 2 महीने बाद, 1 साल बाद जाकर देखोगे, यार वो चीज नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती. तो Absolutely. जिस आधी टेंशन आपकी ऐसे ही खत्म हो जाती है अगर आपको पता है कि ओ अच्छा ये हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो फायदा मुझे होना है. एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड एंड फॉर अ रीजन. सो ये मुझे अपने यंगर सेल्फ को बताना है. बहुत टेंशन ली है मैंने, बहुत नींदें खोई हैं. सो जा बहन, सो जा. Dark दोनों circles. दोनों ही बहुत प्यारी बातें हैं बिकॉज आई नो व्हेन गर्ल्स आर यंग. ये भी मैं आज ही क्रिप कर रही थी उज़मा के साथ कि मेरी बहू पैक कर रही है टू गो फॉर हर जॉब, और अभी वो उसको ऐसा दे रिसेंटली गॉट मैरिड इन जनवरी. तो मैं कह रही थी इन्होंने घर नहीं मैंशन बताया है कि कपड़े इतने हैं कि क्या ले जाओ और क्या नहीं ले जाओ. कि मम्मा यहाँ तो सब शादी के ही कपड़े हैं, मुझे जाके वहां काम करना है, व्हाट डू आई वेयर. सो आई सेड भाई अभी जो है ले जाओ, वहां जाके अपना सवार लेना जो तुमको करना है. सो ट्रू that when you're young these things happen and you shared it so beautifully. So इतना कुछ लाइफ में हुआ है. तुमने बताया कि कभी भूल गई, कभी फंबल कर दिया, कभी कुछ
जो तुम बनना चाहती थी तुम नहीं बनी, वेदर इट इज अ जोक, वेदर इट्स अ रियलिटी, या जो कुछ भी है, जो भी जिंदगी की उतार चढ़ाव आई, इन सब में से आपका कोई एक ऐसा, इवन तो देयर इज नो सॉफ्ट स्टोरी, जब आपने कहा मेरे पास कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है, मैं कहा मैं थोड़ी आपसे रणबीर की स्टोरी पूछ रही हूँ। लेकिन फिर बिकॉज इन सब मूवी ही सेज ना कि स्टार की लाइफ में तो सॉफ्ट स्टोरी होना सॉफ्ट चाहिए। स्टोरी होनी चाहिए, हाँ, एग्जैक्टली। ये हम पर बट बहुत प्रेशर होता ही है इस चीज का हम्म, कि हम तब तक स्टार नहीं, जब तक हमारे पास कोई स्ट्रगल वाली सॉफ्ट स्टोरी नहीं है। लेकिन true. मुझे उनकी बातें बहुत अच्छे से याद है। पंकज त्रिपाठी, रिनाउंड एक्टर, Yes. वो उन्होंने कहा था कि यार मैंने अपना वो किया है, हार्ड वर्क किया है, मैं उसको स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। और वही चीज मैं हमेशा से कहती Beautiful. आई हूँ कि मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है, बहुत किया है। यहाँ तक कुछ सर्टेन थिंग्स आपको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ये रूल है यूनिवर्स का। लेकिन वही है, उस हर एक चीज स्ट्रगल नहीं होती है। तो आप बहुत लोगों का स्ट्रगल अंडरमाइन कर लो तो पता नहीं कितनी कितनी Absolutely. स्ट्रगल करते हुए आ रहे। वही। so in all of this, tell us या about one vulnerable moment of yours and how you overcame it. कोई एक ऐसी बात बताइए जहां आप बिल्कुल मतलब निराश हो चुकी थी और उसमें से आप कैसे निखर कर बाहर आई। Okay, that would be the time when I lost my mother. 6 साल हो गए हैं। My family still never talks about it. When we come together, when we sit together, we never talk about it. I think we haven't come to terms with it. I don't know. There is something जो sting करता है. We don't talk about it, and I don't know how to, get over it. I don't think you can get over such a loss. Um, एंड वो अभी भी रहता है, अभी भी कभी कदार हम लोग घर पे बात नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे आपस में सोचते हैं, या मैं सोचती हूँ, या किसी और से बात कर ली मैंने, अपने हस्बैंड से बात करते रहती हूँ मैं इस बारे में कि ऐसा होता तो मम्मी ये बोलती, या मम्मी ये कहती, ये ऐसा होता। या वो टाइम था जब मैंने मिर्ची ज्वाइन ही किया था, मेरा शो मुझे मिला ही था। बहुत ही वल्नरेबल मोमेंट था वो मेरे लिए। टाइम इनफैक्ट वो पूरा फेज काफी वल्नरेबल था। तो हाँ, मेरे ख्याल से वो सबसे लो पॉइंट था मेरी लाइफ का। बट you just learn to live with it. You just True. make your peace with it. And I ब्यूटिफुल। don't like when people get uncomfortable मम्मी की No, बात no. करती हूँ। Yeah, No, it's in fact, both of us can actually relate to it a lot. I mean, I lost my father almost 10, 11 years back. And as you said, this thing, no, I mean, you cannot make peace with it. You cannot accept it. You yeah, will, keep thinking, and that void always remains, but then you learn to live. So, yeah, I learn to mean, live with I it. Yeah, completely resonate, and I think so would Nandaji because of the reasons. Yes. I completely agree, and I understand the feeling that you're sharing. And yes, a moment like that can be most vulnerable because A, you have lost somebody who's so important to you, and B, you have also got some kind of a work that you have to take on and you have to go ahead. And जैसे आपने बताया, कि earlier you shared something that we just have to go on. You cannot sit and you show cannot up. be. Yeah. उसको लेकर हमको आगे बढ़ना ही पड़ता है. So beautiful your sharing was. And what else would you like to ask her, coach? Yes. Um, I want to ask actually थोड़ा सा चलो mood light करते हैं last question से पहले, because we wanted to have a kind of a fun rapid fire section, and we were Okay. discussing Tripti से क्या कराएं, क्या कर सकते हैं, what should be the twist in our rapid fire, and then we came to the decision that public demand तो naughty नूर जहाँ ही है. So Okay. we we are going to give you a small situation, और Okay. naughty नूर जहाँ उसमें कैसे react करेंगी. You have to just Okay. 1 or 2 lines may you have to do that, right? Okay. So Okay. we have just quick 3 situations for you. Yeah. So the first one is आप जो आपका एक कह सकते हैं हम पैगाम जो आप देना चाहेंगी उन नोजी कॉलोनी की आंटीज को जो हर वक्त देखती रहती हैं कौन कहाँ जा रहा है और कौन क्या कर रहा है. तो what would naughty नूरजहां has to say to
those ओके। aunties. इंटरेस्टिंगली मेरा एक कैरेक्टर है खुशबू आंटी, वो भी यही कैरेक्टर है। ओके। आई रिमेम्बर एक एपिसोड में मैंने इनफैक्ट इस बारे में बात भी की थी कि नॉटी नूरजहां की शाहजहां वाली जो वो हैं फूफी, या मैंने पता नहीं क्या बोला था, खाला, वो जो है लड़का ढूंढ के ला रही हैं हाँ, उसके लिए, शादी कर लो शादी कर लो, तो उस तरीके से कुछ था। सो a lot goes into when like I'm yes, writing this content script, creation. but yeah, like it may or may not be funny, but हमारी शाहजहां वाली फूफी जब कहो तब मुंह उठाकर चली आती हैं, कोई उनको भेजता भी नहीं है वापस। ओ गॉड। this is No, tough, okay. this was nice. um, कहती हैं तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, सॉरी, कहती हैं तुम्हारी उम्र हो गई है, निकाह कब करोगी? हमने कहा उम्र तो आपकी हो गई है, हमने तो कहा उम्र तो आपकी भी हो गई है, आप कब निकल रही हैं? So cool. Superb. That's actually a nice answer to all the people who keep saying about the age. Okay, one, Yeah. Nanda ji, would you like to? No, why don't you ask her? That it would be Okay, fun to okay. ask her. Because when I saw the video of Naughty Noorja for the first time, and I felt कि ये अपनी लखनऊ की तू एक तरीके से है. So these days it's very trending on the reels also, when this one की कौन है वो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा. हाँ. So if it happens to Naughty Noorjahan, कौन है वो? So how would she say and how would she react? Okay. तो क्योंकि शी इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ, तो अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो इट विल बी लाइक कि प्रॉब्लम उसकी है, समथिंग लाइक दैट। सो ओके। हाँ. अल्लाह, अगर हमें देख लेते तो वो चक्कर खा के गिर जाते, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने देखा नहीं हमको। Super. This was cool. This was better than the pool dialogue, I would say. Super duper. And like, I think this character will become even more iconic, and it's going to be, That's I true. would say this, Naughty Nooja aka Poo of Lucknow. I would say that because I really Yeah. this ट्रूथ बी टोल्ड Yeah. मेरे 2-3 कैरेक्टर्स हैं, डिमोटिवेशनल स्पीकर, माँ चंपा कली, नॉटी नूरजहां और खुशफुस आंटी, और इन तीनों में सबसे कम कन्विंसिंग मुझे नॉटी नूरजहां लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन नॉटी नूरजहां के लिए आता है। No, but I think that Lucknowi andaz is मे बी। beautiful, and it Yeah. catches the eye. So So Nanda now ji, the yes. request is we'd like you to do one last one, which is your favorite out of all the reels that you have done. क्योंकि वो शायरा है, शायरा तूफानी है और मैं फेम की दीवानी हूँ, तो एक शेर मैं सुना देती हूँ, जो भी अभी मुझे याद है मैं वही सुना देती हूँ। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छद के थप्पड़ मार के तेरा मुंह लाल करा। Awesome. Super. Fantastic. You So can't but help cool. laugh. Roll with laughter. So beautiful. Absolutely. Thank you so much. So, Tripti, actually, we really want to talk to you on and on and on, but the time is less, and we have a last question for you, which I would like, Nandaji, if you could please ask the last question. Yeah. So the last question that we would like to for you to answer is this: like, you can please share 3 important learnings that you have learned in your life after you became a, like such a well-known RJ and a very famous content writer. So ऐसी क्या 3 learnings आप share कर सकती हैं हमारे young leaders के लिए, brigade के लिए, who can, what is it, अपनी चाय के साथ आप लोगों की चर्चा में शामिल हो, अच्छा लगा,
काफी organized stream. Keep going. Thank you, whoever Thank the you. person Thank is. you so much. So ये तीन आप अपनी learnings के बारे में बताइएगा, please. Okay, so first of all, पहली चीज जो मैंने learn की वो यही है. The first thing I learned was I'm not a successful RJ. No, okay. It will always feel कि कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है. आप हमेशा कहीं आगे जाना चाहते हैं. Anyway, so first जो learning है वो यही है कि be authentic, be yourself, and it's okay. It's a tried and tested thing. You cannot fake. You cannot fake. आप हेलमेट नहीं पहनते हो और आप जनता को बता रहे हो कि नहीं हेलमेट लगा कर निकलो. Cannot work. You cannot preach what you don't practice. Never works. Absolutely. एक टाइम के बाद वो हो जाता है, पता चल जाएगा, किसी ने देख लिया, माइक पर तो बहुत बोलती हैं, ऐसे वाला हो जाता है. फिर secondly एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने लर्न की है वो ये है कि people will treat you the way you let them treat you. Learn to Agree. say no. Learn to say no. क्योंकि आपने एक बार उनको बता देना कि हाँ दे कैन लाइक आपके ऊपर चल के जा सकते हैं, चढ़ के जा सकते हैं, तो वो लोग करेंगे ऐसा. डोंट ओवर एक्सर्ट. टेक योर ऑफ्स, योर वेकेशंस सीरियसली. यू आर रिप्लेसेबल. कल आप निकलोगे कंपनी से, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा. आपकी फैमिली की लाइफ में आप अपनी मेंटल पीस अगर ध्यान में रखें तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, सारी चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं, मेरे लिए सारी चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. थर्डली मैं यही कहूंगी कि बी काइंड. आई सीन पीपल एक बार सर पे चढ़ जाता है ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो तोप हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. काइंडनेस takes you a long way, like it takes you places. So be kind, be humble. उस और इंसान मेरे ख्याल से एक टाइम पर आकर खुद ही सीख जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं. बट अगर आप स्टार्टिंग से ही हम्बल होकर चले, काइंड होकर चले. एंड क्यों ये चीज मुझे इस वजह से जरूरी लगती है आरजेस के लिए, क्योंकि जब हम लोग लिसनर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो अगर आप अप्रोचेबल नहीं है, आप काइंड नहीं है, तो वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे. आप वो बॉन्ड होएगा ही नहीं आपसे. और अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे ये लगता है कि आरजे की यही एक क्वालिटी है जो उसे सबसे डिफरेंट बनाती है बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स से. सो So beautiful. Nanda ji. I'm just stumped with all her sharing, which is so beautiful. And it's really very true that you have to be authentic, you have to be kind. At no point of time can you say that, I have become somebody. अगर आप बन भी गए हो तो भी वो काइंडनेस और वो कंपैशन से, जब प्यार से, हम्बलनेस से लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इट डेफिनेटली टेक्स अस प्लेसेस. आई कंप्लीटली अग्री. एंड इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ पाया, एंड ऑल्सो इतना ठहराव आ गया है that you're able to share these golden nuggets of wisdom. So God bless, and we're very happy to have you here today. And let's thank go you. on. Yeah, let's go on reaching out to the world through the mediums that we have got. Absolutely. Yeah. How had been your experience with being on Thoughtful? It was lovely. I enjoyed every minute of it. I actually love sharing my thoughts, love talking to people like this. And किसी के पास कुछ बातें जो, जैसे भाई हमारा काम ही है बातें पहुंचाना. 9 लोग सुन रहे हैं, 8 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुन रहे हैं, सुन रहा है कोई, हमारी बातें किसी पर इफेक्ट डाल रही हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई टेक इट सीरियसली. So beautiful. Wonderful. And this girl who started by saying that I disappoint the people who do my tarif, and I'm a demotivational speaker, but she has actually proven herself wrong, because she has not disappointed us, and she has truly actually motivated and inspired us by your Now, answers. And yeah. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, मैंने जब बोला कि आई विल डिसअपॉइंट यू एंड फिर मैंने डिसअपॉइंट नहीं किया, तो मैंने टेक्निकली डिसअपॉइंट किया. Reverse psychology. Smart. I like that. So, words are not enough to actually share this
this was such a beautiful episode, and all the learnings that you have given. It is going to really motivate our young audience to truly, stride on the path that they love the most. And yes, important is to show up every day, like we try to show up every Thursday, no matter what it is. And thank you, Tripti, from the bottom of your heart. And thank you to all the lovely audience. There were showers of hearts and comments on Instagram. We could see that. Yeah, really. And Thank you so yes, much, guys. Thank you, everyone. absolutely. So And we'll thank meet you you for next having me. Thank you so Thursday. much. Thank you so much, Tripti, for your Thank you for time. having Bye me. bye, Thank you. everyone. Bye. Bye.